Hello students, Knowledge Street, India's most reliable and trusted educational and entertainment channel welcomes you. Dear students, here in this channel, we are a group of enthusiastic resource persons provide you with all types of educational and allied guidance. If you are a student, a teacher, an educationist or parents, kindly stay tuned with us so that you get notifications of our newly uploaded videos. Dear students, keeping your need in our mind, we set forth to provide you the solution of Icse subjects of all the classes gradually. You can take the help of this channel to solve your problems. Dear students, we in this video are going to solve Icse maths of class 6 chapter 4 rational numbers. Please share these videos to your friends and relatives to stay connected so that they get help from the same. Hello students, let's move to the exercise. Okay, exercise 4.2. The first question is given here. Out of the rational number minus 3 by 11, minus 3 by 12, minus 3 by 9, the greatest one is. It is a multiple choice questions. We have to mark the right answers only. Okay friend, let's move. Here the question is given here, minus 3 by 11, minus 3 by 12 and minus 3 by 19. Okay, solution will be, we have to find out the greatest number. Okay, the number will be greatest which have in which the denominator will be less. Okay, but in this case the numerator are in negative. Okay, when the numerator is negative, okay, the number which have greater denominator will be the is a greatest number. Okay, in this case minus 3 by 19 will be the greatest number. Okay, so our answer will be minus 3 by 19 and the answer will be B. Okay, this is the answer. Next question is given here. Okay, the difference between the greatest and the least number is in minus 5 by 9, minus 1 by 9 and minus 7 by 9 is these are the options. Okay, how we can solve it? Let's move to the questions. Questions are given here that minus 5 by 9, minus 5 by 9, minus 1 by 9 and minus 7 by 9, minus 7 by 9. We have to find out the difference between the largest number and least number in these, among these. Okay, solution will be like this. Okay, greatest number, we have to find out first greatest number. Okay, in this rational number minus 1 by 9. Okay, minus 1 by 9 is the greatest number, minus 1 by 9, and smallest number we can easily find it out. Smallest number is minus 7 by 9. Okay, now the difference will be therefore difference will be minus 1 by 9 minus bracket minus 7 by 9. Okay, we can solve it. Minus 1 by 9, it will be positive. Okay, when we remove the bracket, okay, it will be 9. This LCM will be 9. Okay, so it will minus 1 plus 7, it will be 6 by 9, and 6 by 9 is given in option number D. So D is the answer of these questions. Okay friend, now the second question is, represent the following rational number on the number line. Okay, first one is minus 1 by 2. Okay friend, chaliye let's move to the question and solve it. Okay, it is given that minus 1 by 2. Okay, we have to represent this one a number line. Let me draw a number line. This is a number line. Okay, here the point, this one marks 0. Okay, 0 and it is marked as O. Okay friend, and from this point we have to cut off this line by equal distance. Okay, from this we can write here, this is a mark. Okay, in the same distance this will be a mark. In the right side it will be positive and in left side it will be negative, and the line continues. Okay, so this one is known as A and this one is B. Here this one A dash and this one B dash. Okay, here it marks 1 and this one 2 positive, and this one -1 and this one
minus 2. We have to find out, mark the minus 1 by 2 in decimal number. It minus 1 by 2 lies between 0 and 1. Okay, so here the denominator is 2. We have to divide this line by 2. Okay, in two similar length. Okay, we can mark the point here. Okay, and this point will represent minus 1 by 2. Okay, it represents minus 1 by 2. We can circle this, and this will be the answer. Okay, let's move to the second question 2 of second number. Okay, it is given that minus 1 by 3. We have to represent minus 1 by 3 on a number line. Okay, in the same way we will draw a number line. First, this one is a number line. Okay, the right side of the number line will represent a positive. Okay, and left side will be represented with negative sign. Okay, chaliye, let's move. This point represents 0 and it represents O. Okay, the name of this point is O, and it represents 0 mark. Okay, in this side we mark this number. Okay, and the line continues, and the same distance here 1 and this one. Okay, and this line also continue. Here we have to mark 1. Okay, in this side we write positive, and this side we will write negative. Okay, minus 1 and minus 2. Now we have to, अब क्या करना है हमें कि minus 1 by 3 को इसमें रिप्रेजेंट करना है. देखिए डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, तो हमें 1 और ये 1 और 3 के बीच में है, इसीलिए 1 और 0 वो a को हमें क्या करना होगा, 3 डिविजन्स में डिवाइड करना होगा. ठीक है, चलिए इक्वल डिवीजन होना चाहिए. अब माइनस है तो इस साइड हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसको. चलिए 0 और ओ डैश को 3 डिवीजन करते हैं. यहाँ से ये एक डिवीजन होगा, ये एक डिवीजन हो जाएगा. ओके, हमें दिखाना है माइनस 1 by 3, तो ये है 1 by minus 1 by 3. Okay, this number represents minus 1 by 3, and in the same way this will be the answer of question number 2 of brackets 2. Okay, now question number 2, 3. Okay, we have to solve now this one. It is given that 2 by 3, we have to represent 2 by 3. First, in the same way we will draw a number line. This is a number line. Okay, we will mark here 0. Okay, it is represented by O. Okay, and now this side 0.1, 0.2, 0.3, and the line continues. In the left side also, this one a point, this one a point. Okay, now we'll mark it as A, and this one B, and this one C, and it will continues. और इसको भी A डैश B डैश एक कंटिन्यू होता रहेगा. अब हमें देखना है कि -2 by 3 ये 1 के अंदर ही है. ओके, चलिए इसको हम पहले नंबरिंग कर लेते हैं. ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, एंड दिस साइड इट ऑल्सो विल बी नेगेटिव. ओके, -2 by 3 इट मीन्स कि 0 to 1 इसके बीच हमें 3 डिविजन्स, डिनोमिनेटर जितना है उतना डिविजन्स करना होगा. चलिए इसको 3 डिवीजन इक्वल डिवीजन करते हैं. एक डिवीजन हो गया, एक डिवीजन हो गया, 1 2 3. यहाँ पर जितना रहेगा डिनोमिनेटर उतना डिवीजन हमें बनाना होगा. ठीक है, तो ये हो गया, ये रिप्रेजेंट करेगा 1 by 3, ये 2 by 3 और 3 by 3 ये हो जाएगा. तो 1 2 ये हो जाएगा 2 by 3. ठीक, और इस नंबर को हम लोग क्या कर देंगे, सर्किल कर देंगे. एंड इन द सेम वे दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 2 by 3 एंड दिस will be our answer. Okay, now move to the fourth question. Fourth question asked us -3 by 5. We have to represent this on number line. In the same way we will draw a number line. This is a number line. Okay, we will mark here 0 and it is denoted by O. Okay, this one, this side 1 2 of the same length. Okay, this one 1, this one 2 will represent as 1 and 2 positive, and this side will represent it negatively. Okay, it is A and this point is B,
this point is a dash and this point is b dash. We have to represent minus 3 by 5. It means the denominator is 5. We have to divide, and this is less than 1. We have to divide 0 and 1 this length in 5 division in negative directions. The sign is negative here. Okay, let's divide it in 5 equal division. This one 1, 2, 3, 4, and this is 5 division 1, 2, 3, 4, 5, and here minus 3 by 5. Count from this point 1, 2, 3. This will be minus 3 by 5, and encircle this place, encircle this point, and this will be our answer. We can write here, this is the answer. Okay, the fifth question is minus 3 by 4. Okay, we will solve this in the same way. We have to draw a number line. This is a number line. Okay, put here 0, and this is 1, this is 2. Okay, in the opposite side this is minus 1 and this is minus 2. Okay, here we can write the point name O. This is A and this is B, and this side this is A1 and this is B1, and the line, number line continues. Okay, here the denominator is 4. It means this will be under 1. Okay, minus 3 by 4 in negative directions. So we have to divide this line in 4 equal length. Okay, we now do it precisely. This one 1, 2, 3, and 4. We have to write minus 3 by 4. Count from this this place. Okay, this point 1, 2, and 3, and this represent 3 by 4. Okay, encircle this point, and this represents minus 3 by 4, and this will be our answer. Okay, now move to the question number 5. Okay friend, question number 5 is given here 21 by 4. 21 by 4. First we have to write this one as a mixed fraction. Okay, solution is here. We have to write this one as a mixed fraction. How can we write this 21 by 4? If you divide 21 by 4, it will be 4 5 are 20. Okay, 1 is the remainder, so this one is 5 and 1 remainder is on the upon 4. Okay, this will be the mixed fractions. Now we have to represent this one a number line. Draw a number line. Okay, this one is the number line. This point is 0. Okay, this point is 1, 2, 3, 4, 5, and this one is 6. Mark here 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, here is the point O. This is A, B, C, D, E, and F. In this side, in the opposite side, it will be negative. Okay, 6. Now we have 5 as whole number. We can write this. You can see here, and we have to divide this line, this length by 4 parts. We have to divide this in 4 parts. Okay, now divide 1, 2, 3, 4. This is 4 parts. 1, 2, 3, 4, and 5 1 by 4. 1 by 4 means this point is 1 by 4. So we have to write this point 5 1 by 4 and encircle this line. Okay, this point represents 5 1 by 4, and this will be our representation of 21 by 4 in a number line. Okay, let's move to the next question. Next question is given here. Which of the following represents the same number on the number line? Okay, we have to find out which numbers like 4 by 7, minus 4 by 7 represents the same number on the number line. Let's solve it. The first question is given here 4 by 7 and minus 4 by 7. Okay students, let's solve it. Solution: draw a line and point this 0 and this one 1, 2, 3, and this line continues. Okay, in the same way we have to find out here 1, 2. Okay, represent this 1, 2, 3. In this side minus 1, minus 2. Okay, let's see that minus 4 by 7 and minus 4 by 7. 4 by 7 it will represent under this line. Okay, inside this
this point, okay, it is less than 1, so it will represent in this side. The point 4 by 7 will be, we have to divide this line by in 7 parts, okay. Divide this 1 2 3 4 5 6 and 7, okay. If we represent minus 4 by 7, this side represents minus 4 by 7 and this side will represent plus 4 by 7. So we have to divide this one also in 7 parts, 1 2 3 4 5 6 and 7. So the 4 by 7 will be here, 1 2 3 4. This number will represent 4 by 7. Mark this position, and 1 2 3 4. This point represents minus 4 by 7, okay. Is these two number are in the same number line? No, it is in the opposite number line. So 4 by 7 and minus 4 by 7 are in not on the same number line, okay. We can write here 4 by 7 and minus 4 by 7 are not in the same number on the number line, not in the same number on the number line, okay. And this is our answer. Now the question number 3 is given, 18 by minus 3 and minus 3 by 18. Next the 18 by minus 3 and minus 3 by 18, okay. चलिए हम देख लेते हैं 18 by minus 3, इसको अगर हम लोग नंबर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 by minus 1, 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, -6 by -1, इसका मतलब होता है -6, ओके. अब नेक्स्ट नंबर जो है 3 -3 by 18, ठीक है. इसको जब हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 6 3 जा 8, 3 6 जा 18, ये होता है -1 by 6. देखिए ये जो होता है -6, ये किसमें है? ये है होल नंबर में और ये है रेशनल नंबर में. इसीलिए इन दोनों नंबर, ये जो रेशनल नंबर्स दिया हुआ है, these two numbers will not be in the same number line, okay. So we can write here 18 by minus 3 and minus 3 by 18 are not in the same number line, not in the same number line, okay. Next move to the question number 4. Question number 3 is 4, okay. It is given that -1 by 2 and 5 by minus 10. How can we solve this number? Okay, -1 by 2 no problem. 5 by minus 2, इसको हम लोग पहले इसके छोटे फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, ओके. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है. तो -1 by 2 हो गया, ठीक है. 1 by -2 हो गया. अब इसको अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये -1 by 2 हो जाएगा और ये नंबर इसके बराबर है, ओके. तो ये दोनों एक ही नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो सकता है. चलिए इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं. ड्रॉ अ नंबर लाइन, ओके, हियर. अब क्या करना है, इन दोनों नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है. तो ये होगा 0, इसके बाद 1, इसके बाद 2, इस साइड -1 एंड दिस वन -2, ओके. -1 by 2 इसका है, इसका भी -1 by 2 है. इसका मतलब है 0 और 1 के बीच इसको डिनोमिनेटर कितना है, 2 डिविजन्स में डिवाइड करना है. क्योंकि ये माइनस में है तो हम लोग इस साइड आ जाएंगे, तो ये -1 by 2 रिप्रेजेंट करेगा. इसमें भी -1 by 2 है, इसमें भी -1 by 2 है. सो वी कैन राइट, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं नंबर्स 1 by 2 एंड 5 by -10 रिप्रेजेंट द सेम नंबर ऑन द नंबर. रिप्रेजेंट, ये हो जाएगा माइनस, रिप्रेजेंट द सेम नंबर वन on the number line, ओके. अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का F5, ओके. -4 by 5 एंड -5 by 20 ये क्वेश्चन दिया हुआ है. चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. -4 by 5 एंड -5 by 20, इसको सोल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग. -4 by 5 क्या है, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं. लेकिन -5 by 20 इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी -1 by 4. देखिए इसका डिनोमिनेटर, दोनों का साइन नेगेटिव है, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग है, इसलिए ये अलग अलग पॉइंट को क्या करेगा,
रिप्रेजेंट करेगा. सो वी कैन राइट हियर द रेशनल नंबर्स -4/5 एंड -5/20 are not in the same point on the number line, ओके. क्योंकि ये -4/5 और -1/4, -4/5 इज नॉट इक्वल टू -1/4, इसीलिए ये नंबर लाइन, ये जो है नंबर लाइन में नहीं एक जगह पर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 3/-5, 3/-5 एंड 9/-15. चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का 6. ओके, 3/-5 एंड 9/-15. सॉल्यूशन 3/-5 ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है. ओके, अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं 9/-15. 9/-15 क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं. इसको हम लोग डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं. जैसे 3 3 9 होता है, 3 5 15 होता है. ये बन जाएगा 3/-5. 3/-5 इक्वल टू 3/-5. ओके, सो these two numbers will represent the same point on the number line. दोनों बराबर हैं, इसलिए हम लोग लिख देंगे therefore 3/-5 and 9/-15 represent the same number on the number line. Okay students, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2. ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. ओके डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन हियर 3/7 and 0. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द क्वेश्चन? फर्स्ट रीड आउट द क्वेश्चन. Which rational number in each of the following pairs is greater? Which rational number is the greater? We have to find the greater number. Okay, let's solve this one. Question number 4(1). Okay, 3/7. Okay, no problem. 0, we can write 0 as 0/1, 0/1, 0/2. All these numbers are equal to 0. Okay, so we can put here 0 equal to 0/1. Now 3/7 is here and 0/9 is here. We have to multiply this by this one, this side, and this by this one. Okay, 3 into 1, and here 7 into 0. Here what we find? 3, and either 7 into 0 is 0. Which one is greater? This one is the greater among these number. So we can write 3/7. This side greater, so this side will be greater. It's greater than 0, and this is the answer. Okay. Now question number 4. Question number 4 is 2. Okay. Now solve this. -3/7. Okay, -3/7 and 0. In the same way as we did in last question. Okay, 0 we can write 0/1. Okay, -3/7 is given here and 0/1 is here. Multiply this side by this and this one by this one. -3 into 1, it is -3. 7 into 0 is 0. Okay, it is negative and this one is positive, and positive number is always greater than the negative number. The sign will be here like this, so we have to write -3/7, 0. Put this sign here and this will be the answer. Okay dear students, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 3 सॉल्व करेंगे. ओके, चलिए देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का 3 दिया हुआ है -1/3 and 3/-1. ओके, we have to find out the greater in these pairs. Okay, now solve it. Here -1/3 is given here and the second one is 3/-1. Okay, तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेंगे. तो 3/-1 इंटू -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी -1 से करेंगे, ये बन जाएगा -3/1. ठीक है, अब डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया है. अब इसकी कंपैरिजन करते हैं. -1/3 एंड -3/1. चलिए इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन और इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे. अब -1 into 1. ठीक है, ये 3 into -3. ठीक है, -1 into 1 -1, 3 into -3 -9. अब नेगेटिव में है तो ग्रेटर नंबर वो होता है, ओके, जिसका वैल्यू स्मॉलर होता है. ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव में है, इसीलिए -1 is greater than -9. ओके, in the same way we have to write here
हमें यहाँ लिखना पड़ेगा -1/3 एंड 3/-1, so -1/3 is greater than 3/-1 and therefore -1/3 is the answer. Okay, now move to the question number 4. Okay, question is -3/4 and 3/-5. Solve it. Solution. First हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जिनका नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना लेंगे। यहाँ लिखा हुआ 3/-5 नेगेटिव डिनोमिनेटर, इसीलिए इसको हम -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा -5 इंटू -1 इज 5। अब इसका हम कंपेरिजन करते हैं, -3/4 एंड 3/5। ओके, -3/5। चलिए इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन और इसके साथ इसका -3 इंटू 5, ये हो जाएगा -3 इंटू 4, -3 इंटू 5 -15, ये -12। ओके, अब देखिए कौन सा बड़ा होगा, नेगेटिव में है इसलिए जो डिजिट में छोटा होता है नेगेटिव में वो बड़ा होता है। ठीक है, तो -12 इज ग्रेटर इन दिस सिचुएशन। ओके, सो वी कैन राइट हियर -3/4, इधर 3/-5। ओके, ये ग्रेटर होगा, देयरफॉर 3/-5 इज आवर आंसर। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 5 देखेंगे। ओके, 4 का 5 क्या दिया हुआ है, -2 एंड -3/20। ओके फ्रेंड, -2 एंड -3/20 इनमें से कौन सा ग्रेटर है वो हमें निकालना होगा। चलिए सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं, सॉल्यूशन। ओके, चलिए अब देखते हैं -2, क्या -2 को हम लोग -2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर वही नंबर होता है, तब इसको -2/1 इधर लिख देंगे, इधर -3/20 दिया हुआ है। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -2 से -2 इंटू 20, इधर 1 इंटू -3, ये क्या हो जाएगा -40, ये क्या हो जाएगा -3। ओके, -40 एंड -3। अब इनमें से बड़ा कौन सा है, क्योंकि बिकॉज द नंबर्स आर इन नेगेटिव। ओके, तो बड़ा वो होता है इसका डिजिट कम होता है, तो ये कम डिजिट का है इसीलिए ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक, और जो बड़ा डिजिट का होता है नेगेटिव रहने पर वो छोटा होता है। ठीक, चलिए इसीलिए हम लोग लिख देंगे इसको -2 एंड -3/20, -2 is less than -2/3 and this will be the answer. Okay, अब क्वेश्चन नंबर 6, 2 1/2 and 3 1/4। ओके, इसको हमें दिखाना है कि कौन सा बड़ा होगा। चलिए 2 1/2 को क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 4, 4 + 1 5, ये हो जाएगा 2 2 4 + 1/2, इट मीन्स 5/2। इसी तरह इसको भी इसको बना लेंगे, 3 4 12, 12 + 1/4, इसका मतलब होता है 13/4। चलिए इसको कंपेरिजन करते हैं, 5/2 और इधर लिख देते हैं 13/4। इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 4 और इसके साथ इसका 2 इंटू 13, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 13 2 26। ओके, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा होगा, इसीलिए इस साइन को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, देयरफॉर इसी साइन को। ठीक है, 2 1/2 एंड 3 1/4, इस साइन को यहाँ पर पुट कर दीजिए, 2 1/2 इज लेस देन 3 1/4। ओके, एंड दिस विल बी द आंसर। ओके।